आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। दुनिया में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। This is a vote on account to keep the government solvent over the first quarter of the next financial year. What is extremely worrying is the increasing fiscal deficit, because the numbers which have been presented by the finance minister clearly demonstrate that over 18 lakh crores is the unfunded extent of the union budget for this year, and this number is only going to increase over the next year. If you leave that aside for a moment, the rest of the budget speech was mere grandstanding. It was like driving, looking into the rear view mirror rather than looking ahead. So therefore, the finance minister spent all her time in extolling her own track record, which obviously is questionable, and trying to run down what had happened 10 years back. We will reply to it in great detail when the debate on the budget takes place. Well, it was one of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR kind of rhetoric. The GDP I see is government disruption. I see not just not development, but rather, frankly, demographic betrayal of the young.
And when I see P, I see poverty rising and particularly inequality at the bottom echelons of our society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. वित्त मंत्री राजेव चंद्रशेखर सीतारमण जी ने आज जो इंटरिम बजट पेश किया, ये फुल फ्लेज बजट नहीं है इंटरिम बजट, लेकिन इंटरिम बजट जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं कि इस इंटरिम बजट के कारण जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की 5 कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आगे मोर देन $7 ट्रिलियन तक. This is an interim budget, as you know, and this is certainly our Honorable Finance Minister has done an excellent job in summarizing what has happened and how India has transformed in the last 10 years. From a fragile 5 economy that was a situation in 2014, we are today the top 5 economies of the world. We are the fastest growing economy in the fastest growing major economy in the world. And it is clear today that India is on a launch pad to become a developed nation in our lifetime. So this has been an excellent summary, the interim budget, of what the qualitative and quantitative transformation of the Indian economy has gone through in the last 10 years. Prime Minister Narendra Modi ji's policies, his governance, his corruption-free governance, his use of technology in governance has ensured that every person, every Indian has been touched by the government and governance through various schemes and through the determination to make sure nobody is left behind. So Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas has played out not just as a slogan, as a real governance ideology and a governance theme. इंटरिम बजट है, लेकिन इसमें भविष्य की उपलब्धियों का जिक्र है, अतीत की और भविष्य का एक मजबूत रास्ता है कि जुलाई में हम फिर पूरा बजट देंगे तो हमारी विजय निश्चित है. लेकिन इसमें जो तीर्थ यात्रा के पूरे प्रावधान किए गए हैं और जो सोशल जस्टिस बहाना नहीं है, डिलीवरी गवर्नेंस भी सोशल जस्टिस का अंग है. तो गरीबों को जो राहत दी गई है, उनको सब आवास हो या गैस हो व्यवस्था की गई है और कितनी बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है. उनको विश्वास है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से हमारे पैसे का उपयोग करती है. तो अगर नेता सही हो, नीयत सही हो, ईमानदारी हो और भविष्य के प्रति समर्पण हो तो ये बजट उसका एक प्रकार से संकेत देता है. अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री का और वित्त मंत्री जी का. और देश में एक बहुत ही इससे मजबूती आएगी. एक बात मैं अवश्य कहूँगा, जो 14 से पहले की इकोनॉमी और आज की इकोनॉमी को जो वाइट देने की बात की, वो देश को बहुत बताना जरूरी है कि आज फ्रेजाइल 5 से भारत दुनिया की 5 टॉप इकोनॉमी कैसे बनी और तीसरे पर जाए. बड़ी बात है. I looked up 5 balance sheets on Moneycontrol. I'll do it on the fly. This took me exactly 3 minutes, thanks to Moneycontrol. First thing to come up is Moneycontrol. So I don't even have to scroll down to look at. I click and I get what I want. When I started my career, there was a huge information arbitrage between institutional investors and retail investors. The arbitrage gap between institutional and retail investor has disappeared, mainly due to Moneycontrol. Congratulations, Moneycontrol, and thank you so much for being there. Absolutely delighted with the news that Moneycontrol has overtaken the Economic Times. Moneycontrol has slowly and steadily become the go-to site for all updates. Moneycontrol has good ideas, detailed ideas, stock specific ideas. Life of the market is Moneycontrol in the sense that you get everything what needs to be known